Good evening and welcome to News Tonight on Rajya Sabha TV. I'm Tina Jha, wishing all our viewers a very happy Dashera. Let's begin the bulletin with the headlines. Defence Minister Rajnath Singh receives first of the 36 Rafale fighter jets in France. Calls moment historic for bilateral relations, says it will go a long way in strengthening strategic ties between the two countries. Dashera celebrated with traditional fervour and joy across the country. Vice President M. Venkaiah Naidu and former Prime Minister Dr. Manmohan Singh take part in celebrations in Delhi. The Vice President says eliminating social evils must for overall development of the country. Celebration of Dashera instills positive energy among people, says Prime Minister Narendra Modi. In an address at another Dashera function in Delhi, calls upon citizens to take one pledge each to undertake a task in the interest of the country. The 2019 Nobel Prize for Physics awarded to Canadian-American physicist James Peebles and Swiss scientists Michel Mayor and Didier Queloz. Peebles awarded the prize for theoretical discoveries in physical cosmology, Mayor and Queloz for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star. And MC Mericom reaches quarter-finals of the World Boxing Championship, beats Thailand's Jutamao Jutpang 5-0 in pre-quarterfinals. The festival of Vijayadashmi and Dashera is being celebrated with traditional fervour across the country. President Ramnath Kovind greeted the people on the occasion of Dashera and took part in the IP Extension Dashera celebration program in the national capital. And on the occasion of Vijayadashmi, Vice President M. Venkaiah Naidu extended his warm greetings and good wishes to the people while attending a Dashera celebration at Subhash Park in the national capital. The Vice President said that one should constantly quell the demonic forces and foster goodness and harmony. He said we must strive to annihilate social evils, poverty, discrimination, illiteracy, inequality, casteism, fundamentalism, and corruption. He added that the message of Ramayana is even more relevant in today's era as the world is facing all kinds of challenges. I extend my warm greetings and good wishes to the people of the country on this auspicious occasion of Dasara, a colorful festival celebrated with great fervour and zeal all over the country. As per Hindu beliefs, today is the day when Lord Rama returned to his kingdom Ayodhya after defeating the demon King Ravana. It is also believed that this is the day when goddess Durga rid the world of demon Mahishasura. Whichever epic you choose to believe in, it is clear that Dashera symbolizes the victory of good over evil or ritualousness and virtue over sinfulness. यह पर्व हमें यह स्मरण करता है कि हम सदैव सत्य और सदाचार के मार्ग का निष्ठापूर्वक अनुसरण करें। आज जब हम रावण का दहन कर रहे हैं, तब हम अपने अंदर के बुराइयों और कुरीतियों का भी दहन करें। रामायण का महाकाव्य हमें विश्व, समाज, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्यों का स्मरण करता है। रामायण में मनुष्यों के बीच परस्पर संबंधों की मर्यादा को निर्धारित किया गया है। धरती, प्राकृतिक परिवेश, जीव जंतुओं का साथ मनुष्य को संबंध को परिभाषित किया गया है। आज के युग में विश्व शांति और प्रगति के सामने खड़ी हो रहे चुनौतियों को संदर्भ में रामायण का संदेश आज और भी अधिक प्रासंगिक है।
Prime Minister Narendra Modi also attended the Dussehra celebrations in Dwarka. Speaking at the Ram Leela ground, the Prime Minister said that festivals are a source of culture in India and they bring people together. The Prime Minister urged the citizens to take a pledge to take eco-friendly initiatives. Delhi BJP MPs felicitated the Prime Minister with a Gada at the event. The Prime Minister took Delhi Metro's Airport Express line to reach the venue in Dwarka Ram Leela ground for Ravan Dahan. आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति का पर्व, विजय का पर्व। लेकिन समय रहते हुए हमने हर पल हमारे भीतर की आसुरी शक्ति को परास्त करना भी उतना ही जरूरी होता है। और तभी जाकर के हम राम की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु राम की अनुभूति करने के लिए हमने भी अपने जीवन में विजयश्री पाने के लिए डगर डगर पर विजयश्री पाने के संकल्प के साथ हमारी भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति को सामर्थ्य देते हुए हमारे भीतर की कमियां, भीतर की वीकनेसेस, भीतर की आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना ही हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। आज विजयादशमी के पर्व पर और जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब सभी देशवासी संकल्प करें, हम देश की भलाई के लिए एक संकल्प इस वर्ष में पूर्ण करके रहेंगे, जिससे किसी न किसी के द्वारा देश की भलाई का काम हो। अगर मैं पानी बचाता हूं, वो भी एक संकल्प हो सकता है। मैं कभी खाना खाता हूं, जूठा नहीं छोड़ूंगा, ये भी संकल्प हो सकता है। मैं बिजली बचाऊं, ये भी संकल्प हो सकता है। मैं कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना दूंगा, ये भी संकल्प हो सकता है। हम ऐसा कोई संकल्प और विजयादशमी के पर्व पर संकल्प लेकर के, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हो, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, ऐसा पवित्र अवसर, ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। इस संयोग का उपयोग करते हुए, उसी में से प्रेरणा पाते हुए हम भी कोई न कोई संकल्प करें अपने जीवन में और विजयश्री प्राप्त करके रहेंगे, ये भी हम तय करें। सामूहिकता की शक्ति कितनी होती है। And on to the other big news of the day. On its 87th Foundation Day, the Indian Air Force received its first Rafale fighter jet from a series of 36 aircraft purchased from France on Tuesday. Defence Minister Rajnath Singh accepted the handover at a facility of Rafale manufacturer Dassault Aviation in Bordeaux. Also present at the ceremony were his French counterpart Florence Parly and the top brass of aircraft maker Dassault Aviation. The handover ceremony was preceded by a traditional puja by Rajnath Singh. And after receiving the fighter jet, the Defence Minister also took a sortie in the aircraft. While the formal handover ceremony took place on Tuesday, the first batch of 4 Rafale jets will fly to India by May 2020. Remember, India had ordered 36 Rafale fighter jets from France in a deal worth 59,000 crore rupees in September 2016.
All 36 jets are expected to arrive in India by September 2022. मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि रफाल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायुसेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। हमारा फोकस वायुसेना को समृद्ध करने और उसकी क्षमता को बढ़ाने पर है। एक्सेलेंसी मिनिस्टर, हमें विश्वास है कि फ्रांस द्वारा सभी 36 रफाल एयरक्राफ्ट और संबंधित इक्विपमेंट्स व वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी टाइमलाइंस को पूरा किया जाएगा। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारत की वायुसेना के अनेक अधिकारी और एयरमैन फ्रांस में फ्लाइंग, मेंटेनेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स आदि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ फ्रेंच फैसिलिटीज में उनके प्रशिक्षण से उनको भारत में उनके काम के लिए अपेक्षित ज्ञान और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हासिल करने में भी मदद मिलेगी। आज का दिन इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया माइलस्टोन है और वास्तव में बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन में नई ऊंचाइयों को छूता है। ऐसी उपलब्धियां हमें और बहुत कुछ करने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। फ्रांस के सहयोग का शुक्रगुजार हूं, जो न सिर्फ रक्षा अपितु अन्य मामलों में भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि विश्व की दो मुख्य एवं बड़ी लोकतंत्र के बीच मजबूत सहयोग बढ़ता रहेगा और वह विश्व की शांति, समृद्धि और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को स्थापित करने में भी मददगार साबित होगा। Before receiving the Rafale jet, Rajnath Singh met French President Emmanuel Macron in Paris, during which he discussed issues relating to defense and security ties between the two countries. And the Indian Air Force celebrated its 87th Foundation Day today, as we told you earlier. President Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaiah Naidu, Prime Minister Narendra Modi, and several other political leaders extended greetings on the occasion. Celebrations took place at the Hindon Air Force Station in Ghaziabad, where Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria said the Indian Air Force will continue to safeguard the interest of the country at all costs. Happy to compliment all the air warriors for maintaining operational preparedness of a very high order. In the recent years, the geopolitical environment has been rapidly changing, and uncertainties have created numerous challenges in national security. It is extremely important that we are always vigilant and alert to the existing subconventional threat. In the year gone by, the Indian Air Force has demonstrated its resolve and capability in punishing the perpetrators of terrorism, and we need to be ever prepared to meet any contingency that challenges the defense of our country. Chiefs of the three services paid floral tributes at the National War Memorial. The Balakot heroes were also awarded. A scintillating air display by various aircraft was showcased to celebrate the Air Force Day Parade. The newly acquired Chinook heavy lift helicopters participated in the grand flypast. HADR missions. Another new entrant in the force, the Apache attack helicopters, followed the Chinook in the air drills. Both these helicopters were acquired from the US and inducted into the Indian Air Force in the last few months. Also part of the air drills was the light combat aircraft Tejas. Balakot heroes, along with Indian Air Force Wing Commander Abhinandan Vartaman, participated in the celebrations. Wing Commander Vartaman led the flypast in a MiG-21 Bison. Led by Wing Commander Abhinandan. And finally, Surya Kiran, the 9-aircraft aerobatics demonstration team of the Indian Air Force, was the center of attraction with its dazzling and thrilling air formations. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the Indian Air Force on its 87th Foundation Day. हमारी वायुसेना
आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। 1947 में, 1965 में भी, 1971, 1999 वायुसेना की भूमिका अहम रही। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा है। India has lashed out at Pakistan for weaponizing women's rights issues for self-serving political gains in the state of Jammu and Kashmir. First Secretary in India's permanent mission to the UN, Bulletin Tripathi, said, "It is ironical that a country where violations of women's right to live in the name of honor go unpunished is making baseless statements about India." Bulletin Tripathi did not directly name Pakistan, but was responding to references made to Jammu and Kashmir by Islamabad's outgoing envoy to the UN, Maliha Lodhi. The Rajya Swayamsevak Sangh also celebrated its foundation day on Tuesday. The function was held at the sprawling ground of Resham Bagh in Nagpur. The program commenced with route march. HCL founder and chairman and Padma Bhushan recipient Shiv Nadar is the chief guest of the event. Several dignitaries, including Union Minister Nitin Gadkari, VK Singh and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, attended the program. Addressing the event, RSS Chief Mohan Bhagwat praised Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah over the government's move to abrogate Article 370 in Jammu and Kashmir. जो विश्वास प्रकट हुआ तो जनभावना को ध्यान में लेकर और देश को हित को ध्यान में लेकर साहसी और कठोर निर्णय लेने की ताकत इस सरकार की है, ये भी सिद्ध हुआ जब 370 को अप्रभावी बनाया गया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ। सारे देश के जनता की इच्छा तो बहुत दिनों की थी। जो सत्तारूढ़ दल है उनका भी विचार कोई छुपा नहीं था। वो दल जिस दल से निकला, जनसंघ नामक, उस जनसंघ के जन्म के बाद उसका पहला आंदोलन इसी बात को लेकर था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। On to some other news. Actor R. Madhavan, along with his son Vedant, met Vice President M. Venkaiah Naidu on Tuesday. They exchanged views on movies, social service, promotion of culture, heritage and social responsibility of cinema. The Vice President also congratulated Madhavan's son Vedant and his team members for winning a silver medal and also extended his best wishes to them for a bright future. 3 scientists won the 2019 Nobel Prize in Physics on Tuesday for their work in understanding how the universe has evolved and the Earth's place in it. The prize was given to James Peebles for theoretical discoveries in physical cosmology, and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star. An exoplanet is a planet outside the solar system. And 6-time champion MC Mary Kom on Tuesday advanced to the quarterfinals of the World Women's Boxing Championship after a hard-fought victory in the last 16 stage in Russia. Mary Kom triumphed 5-0 against Thailand's Jutomasjit Pong, a spunky boxer who kept the veteran on her toes with an aggressive approach but just did not connect enough. The third-seeded Indian, who got a bye in the opening round, spent the first 3 minutes getting a good measure of her opponent before taking control of the proceedings. Mary Kom, chasing her first world medal in the 51 kg division, picked up pace in the second round and was especially sharp with her counterattacks. And time for a short break, but news and updates will continue on the other side. Do stay with us. Watch The Big Picture with me, Frank Rausen Pereira, at 9:30 p.m. What are some key legislations introduced in Rajya Sabha?
Some of the key legislations introduced in Rajya Sabha are the Indecent Representation of Women Bill 1986, the Indian Succession Bill 1991, and the Marriage Laws Bill 1999. Let's now get you all the news and updates from the two poll-bound states of Maharashtra and Haryana. First, all the updates from Maharashtra. Union Home Minister and BJP President Amit Shah held an election rally in Savargaon Ghat in Beed district on Tuesday. Shah also attended the Dussehra festivities there. In his address at a public meeting, Amit Shah praised Prime Minister Narendra Modi for the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir. He said the move has ensured that Jammu and Kashmir is now connected with the rest of the country. Amit Shah said that the BJP-led union government is working on many development projects and that the Prime Minister has formed the OBC Commission, which many governments could not do in the last 70 years. 70 साल से ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम जो सरकारें आई वो नहीं करती थी। आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी ने वंचित समाज को, ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया और ओबीसी समाज के लिए एक संवैधानिक आयोग की रचना का काम किया। The Western Maharashtra region is the largest in terms of assembly seats. For any party to form the government in Maharashtra, its fortunes in Western Maharashtra and Vidarbha play a very important role. Let's take a look at the graph of political parties here over the last few elections. Western Maharashtra, the region that sends the most MLAs to the Maharashtra Assembly. 70 out of the 288 assembly seats in the state are from Western Maharashtra. 6 key districts are part of the region. They include Pune, Ahmednagar, Sholapur, Kolhapur, Satara and Sangli. Out of the 70 seats in Western Maharashtra, 8 are reserved for scheduled castes and 1 for scheduled tribes. Western Maharashtra was believed to be a Congress-NCP bastion till 2014 elections, which marked a shift towards the BJP and Shiv Sena. In 2014, BJP won 24 seats in the region, a major climb from the 11 seats it won in 2009 assembly polls. Shiv Sena also upped its tally from 9 seats in 2009 to 13 seats in 2014. Congress could manage to win just 10 seats in Western Maharashtra in 2014, lowering its tally from 13 seats in 2009. NCP also came down from 25 seats in 2009 to just 19 seats in 2014. Other parties won 4 seats in 2014, down from 12 in 2009. In the 2014 Maharashtra Assembly polls, all 4 parties went solo. However, this time around, the parties have joined forces once again, with the BJP-Shiv Sena alliance taking on the Congress-NCP combined. Bureau Report, Rajya Sabha TV. And let's now get you all the election stories from Haryana. Former Deputy Chief Minister of Haryana and Congress candidate from Panchkula, Chandra Mohan, has denied differences within the party. The leader also believes that he will benefit from the political legacy of former Chief Minister Chaudhry Bhajan Lal in the upcoming polls. Our correspondent Ravindra Singh Sharan spoke to Chandra Mohan about his upcoming campaign and his party's electoral chances. सर, चौधरी भजन लाल की एक लंबी राजनीतिक पारी रही, करीब 13 बरस वो सूबे के सीएम रहे और वो शायद ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो कि सब जातियों को साथ लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री उनका माना गया।
आपको लगता है कि उनकी जो राजनीतिक विरासत थी उसका लाभ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा इस बार? देखिए, चौधरी भजनलाल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम आज जो कुछ भी हैं उनके सिखाए हुए रास्ते पे, उनके दिए संस्कारों की वजह से ही हैं। निश्चित रूप से लाभ तो हमें मिलेगा ही उनका, कांग्रेस पार्टी को भी लाभ मिला है उनका, कांग्रेस पार्टी का लाभ भी हमें मिलेगा। इसके अलावा आदमी का खुद का व्यवहार क्या है पब्लिक के साथ, और उसने क्या काम किए हैं, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। आपके बारे में चंद्रमोहन जी हमेशा तारीफें सुनते रहते हैं कि चंद्रमोहन जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और लोगों के काम जो भी उनके पास लेके जाता है वो करते हैं। तो सर क्यों चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जबकि आप लोग लगातार कैंपेन कर रहे थे भव्य बिश्नोई के लिए भी? तो क्या कारण आपको लगता है? ये कारण तो कई हैं इसके, लेकिन बेसिकली विधानसभा और लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप तब हार गए तो आज अगर बारिश हुई तो कल भी बारिश ही होगी। आप देखेंगे कि आने वाले 24 तारीख को चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस मिनिमम 65 सीट जीत कर निकलेगी। लेकिन सर इन फाइटिंग बहुत है एक दूसरे के साथ। अशोक तंवर ने खुल के बोला कितनी बातें कि टिकटों का बंटवारा इस तरीके से हुआ है कि बेची गई है। कांग्रेस एक समुंदर है, बहुत बड़ा परिवार है। पारिवारिक मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अब कोई ऐसा मतभेद नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच्चाई से कोसों दूर है कि कोई टिकट बेची गई है। ऑन मेरिट जिसको पब्लिक चाहती है उसको कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया है। ठीक है, जिसकी टिकट कटती है उसको तकलीफ तो होती है, वो कुछ भी कह सकते हैं। And that's it from us in this bulletin. Thank you very much for your time.